Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box. If I am audible, please write yes in the comment box so that I can start, I can continue. So yesterday we have seen the adrenolytic drugs or sympatholytic drugs. So today we'll see parasympatholytics, parasympathomimetics. Right? Yes. So yesterday, what we have seen yesterday? We have seen yesterday alpha blockers, beta blockers, all these things we have seen yesterday. Right? ये सब चीजें अपने देखे हैं yesterday. Propranolol वगैरह. So today we'll see the pharmacology of parasympathetic nervous system. So yesterday we have seen this. Yesterday we have seen all the sympathetic system, sympathomimetics. We have seen the sympatholytics also. Now, so mydriasis and meiosis, I would like to explain you in a short. कि mydriasis क्या होता है, meiosis क्या होता है, right? So this is known as a mydriasis. This is known as a meiosis. Say for example, आपका ये क्या है? So this is your eye. This is your eye. ये eye, and this black portion is nothing but the pupil. The black portion is nothing but the pupil of your eye. ये क्या है? Black portion pupil है. This one is known as the pupil of your eye, or you can say it is known as the eyeball also. So pupil or eyeball, right? So if there is an increased size of pupil known as a mydriasis, if there is a decrease in the size of pupil known as a meiosis. तो meiosis, mydriasis क्या होता है कि if there is an increase in the pupil size known as a mydriasis, if decrease in the pupil size known as a meiosis. Now sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, they have opposite effect on the eyes. You know, suppose you are in the jungle and there is a tiger in front of you, so you want to run away from the tiger. So what you need a precise vision. जब आपके सामने कोई threat आता है, जैसे say for example, if you have any tiger in front of you, so what will happen? So adrenaline will be released or noradrenaline will be released. So what noradrenaline will do? They are known as these lines are known as the radial muscles. They are known as the radial muscles. Okay, they are known as the radial muscles. Right? So what they will do? So adrenaline or noradrenaline, what will it do? So adrenergic stimulation or noradrenaline, okay, by acting on alpha 1 receptor present on the radial muscle of iris. So it will constrict the radial muscles and there will be dilation of pupil. So pupil will be dilated. So that is known as the mydriasis. So noradrenaline will cause mydriasis. So alpha 1 agonist will also cause mydriasis. Alpha blockers will cause meiosis, like that. Okay. Now meiosis means what? Decrease in the pupil size. देखो यहाँ पे your pupil size is decreased. Suppose you came at a home. Now you are under the parasympathetic dominance. जब acetylcholine release होगा, acetylcholine, it will act on a sphincter muscle of iris. Sphincter muscle कौन से? So in this area you see these are known as sphincter muscles. Sphincter muscle, and they will constrict it. So there is a constriction of sphincter pupillae, and that's why there is a meiosis. You can see here is a decreased pupil size. So adrenaline, noradrenaline क्या करता है? Mydriasis करता है. Acetylcholine क्या करता है? Meiosis करता है. ठीक है, meiosis करता है. तो just okay, explain किया है मैंने. Because if you understand this, you will understand the why alpha blockers they causes the meiosis, why muscarinic antagonist causes the mydriasis, right? So now we'll see the cholinergic drugs. So we have seen the pharmacology of
adrenergic drugs. So drug acting on ANS we were seeing. We have finished our sympathetic drugs or sympathomimetics or sympatholytics. Sympathomimetics or adrenergics, sympatholytics or anti-adrenergics. Anti-adrenergics we have already completed. Okay. Now it is a cholinergic drugs or anti-cholinergics. So cholinergic drugs also known as a cholinomimetic drugs. So drug which will show the actions similar to the acetylcholine, or drugs which will show action similar to the actions produced by stimulation of cholinergic nervous system, known as a cholinomimetic drug. So those drugs which will mimic the responses that are produced by acetylcholine, known as a cholinomimetic drugs, and those drugs which will block the actions of acetylcholine. Those drugs which will block the actions of acetylcholine, they are known as anticholinergics, or also known as antimuscarinics, in simple terms. Now we'll see. We have already seen the different neurotransmitter at the beginning only. So acetylcholine is a neurotransmitter for cholinergic system. Acetylcholine is a neurotransmitter for cholinergic system or parasympathetic system. ये तो पार्ट आपने ऑलरेडी देखा है, बट स्टिल अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज इन शॉर्ट. सो acetylcholine is a neurotransmitter for parasympathetic nervous system or cholinergic nervous system. The acetylcholine is a, in case of parasympathetic nervous system, preganglionic as well as postganglionic neurotransmitter is acetylcholine, and in case of sympathetic, preganglionic is acetylcholine, post is a noradrenaline. Now it is synthesized from two molecules in the nerve fiber. जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें क्या है कि एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज होता है. कहाँ से होता है? तो एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज्ड इन द कोलिनर्जिक न्यूरॉन बाय द एंजाइम नोन एज द कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज. नाउ दिस एंजाइम will catalyze the condensation of choline. Choline is a nitrogenous base which is uptaken from extracellular fluid, and acetyl from acetyl-CoA. So acetyl-CoA and choline, they will combine together to form acetylcholine. The reaction is catalyzed by choline acetyl transferase. Now acetylcholine is synthesized, it is stored in the synaptic vesicles, and whenever there is a signal, when there is a stimulus, it will be released. Okay, now it will be released, it will act on its receptor. Okay, that is a muscarinic receptor, nicotinic receptor. Some part of that acetylcholine will be reuptaken, some part of acetylcholine will be metabolized, right? So that is metabolized by cholinesterase enzyme, and that's it. Okay, so drug also affect the synthesis, storage and release of acetylcholine. So देखो, hemicolonium that inhibit the choline uptake, and that's why prevent the synthesis of acetylcholine. Vasimicol inhibit the vascular uptake of acetylcholine and increases the acetylcholine level. Botulinum toxin inhibit the release of acetylcholine, right? Release of acetylcholine. Now acetylcholine is metabolized by, कौन सा? acetylcholine को metabolize करने वाला एंजाइम कौन है? acetylcholine is hydrolyzed into choline and acetic acid. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बोला था उस टाइम पे. by the enzyme cholinesterase, by the enzyme cholinesterase. acetylcholine क्या है? ester of, है ना, ester of choline with the acetic acid. What is acetylcholine? Ester of choline with the acetic acid. That's why after metabolism you are going to get a choline and acetic acid. Okay. Now there are two enzymes known as a cholinesterase. Okay, so first one is known as acetylcholinesterase. Acetylcholinesterase. Acetylcholinesterase, also known as a true cholinesterase. Acetylcholinesterase, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, एंटी हुआ है, तो इट इज acetylcholinesterase. Acetylcholinesterase और true cholinesterase. Acetylcholinesterase or true cholinesterase that will metabolize acetylcholine rapidly. Now true cholinesterase is present in the neurons. ये नर्व में होता है, न्यूरॉन्स, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में ये क्या होता है? ट्रू cholinesterase. It is present in the neurons, ganglia and myoneuronal junction, and that will hydrolyze acetylcholine, that will metabolize acetylcholine rapidly. Okay. दूसरा होता है butyrylcholinesterase. Butyrylcholinesterase, also known as a pseudocholinesterase. It is present in the
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे प्लाज्मा में होता है, लीवर में होता है एंड अदर ऑर्गन्स, दैट विल हाइड्रोलाइज और मेटाबोलाइज एसिटिलकोलिन स्लोली बट विल नॉट मेटाबोलाइज द मिथाकोलिन. मिथाकोलिन क्या है? इट इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलकोलिन. ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपन ने देखा है बट चैप्टर है तो इसलिए अगेन आई एम रिवाइजिंग इट. राइट, तो देखो यहाँ पे वी हैव सीन दिस थिंग्स. तो एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलिन एंड एसिटिल-कोए. सो है ना, तो एसिटेट प्लस कोए तो बनेगा कोलिन. एसिटेट प्लस कोए तो बनेगा एसिटिल-कोए एंड कोलिन इज टेकन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो ये नर्व में होता है. नाउ ओके, अपटेक ऑफ कोलिन, कोलिन का अपटेक जो होता है, अपटेक ऑफ कोलिन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अपटेक ऑफ कोलिन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप. ये रेट लिमिटिंग स्टेप है. सो इन द सिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन द स्लोएस्ट स्टेप, rate limiting step is nothing but the uptake of choline from extracellular fluid. Okay, now choline and acetyl-CoA will combine to form a acetyl-CoA, to form a Achea. So acetyl-CoA and choline will form choline, acetyl-choline. So that is catalyzed by choline acetyl transferase. तो ये एंजाइम कैटलाइज करता है, एसिटिलकोलिन बनेगा. एसिटिलकोलिन मेटाबोलाइज कौन करता है? कोलिन स्ट्रेस. उसके दो टाइप होते हैं, ट्रू कोलिन स्ट्रेस और एसिटिलकोलिन स्ट्रेस, और दूसरा होता है स्यूडोकोलिन स्ट्रेस और ब्यूटाइरोकोलिन स्ट्रेस. ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है? कोलिन एंड एसिटिक एसिड. तो यही चीज यहाँ पे दिखा है कि इन द न्यूरॉन, इन द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, सो कोलिन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड that is uptaken into the neuron and acetyl-CoA and choline combine together to form a acetylcholine, to form a acetylcholine. Right, acetylcholine is synthesized, stored in the synthetic vesicle, released by process of exocytosis. यहाँ पे याद रखना है, released by the process of exocytosis, exocytosis है ना. so released acetylcholine यहाँ पे रिलीज होगा साइनेप्स में. it will act on a post synaptic receptor. इसके रिसेप्टर कौन से है? muscarinic and nicotinic. ठीक है, some part will act on a receptor, some part will be reuptaken, some part will be reuptaken. Okay, some part will be reuptaken in the synaptic vesicle, some part will be metabolized by choline esterase enzyme. ठीक है, ये पार्ट ऑलरेडी दिखा है हमने. तो अगेन ये भी देखा है ऑलरेडी. सो हेमिकोलोनियम, तो हेमिकोलोनियम क्या करता है? हेमिकोलोनियम इनहिबिट द अपटेक ऑफ कोलिन. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, ये नर्व आता है, नर्व में कोलिन को जाने नहीं देता है. दैट्स व्हाई हेमोकोलिनियम इनहिबिट द अपटेक ऑफ कोलिन. ये बाद में उसका यूज बाद में आएगा आपको. वेसिमिकॉल इनहिबिट द वेसिकुलर अपटेक ऑफ कोलिन. बोटुलियम टॉक्सिन है ना, बोटुलियम टॉक्सिन इनहिबिट द एसिटिलकोलिन रिलीज है ना. नाउ यू कैन मॉडिफाई, अगर आपको है ना, अगर आपको एसिटिलकोलिन का लेवल ज़्यादा चाहिए न्यूरॉन में या फिर एसिटिलकोलिन का लेवल कम करना है, तो यू कैन मॉडिफाई द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन, और यू कैन ब्लॉक द रिसेप्टर, यू कैन स्टिमुलेट द रिसेप्टर. सो वट एवर डिजायर्ड एक्शन यू वांट डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज. डिसीज में क्या होता है ना, जैसे आपका अल्जाइमर डिसीज है. सो अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है? सो अल्जाइमर डिसीज इज नथिंग बट द न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज which involves the degradation of cholinergic neuron. तो देखो अल्जाइमर डिसीज जो है, अल्जाइमर्स डिसीज यहाँ पे लिखता हूं मैं ए. अल्जाइमर डिसीज, इन द अल्जाइमर्स what happens? in the Alzheimer your acetylcholine containing neurons are degenerated, मतलब they are lost. So obviously there is a deficiency of acetylcholine. So in that case you have to increase the acetylcholine. How you can increase? Either you can increase either by stimulating the synthesis, either by increasing the release, either by stimulating the receptor, either by inhibiting the uptake है ना. तो in case of Alzheimer disease what is desired? वहाँ पे acetylcholine ऑलरेडी कम है तो उनको बढ़ाना है. Now if there is a overactivity of if there is a excessive cholinergic activity, so in that case आपको उसका एसिटिलकोलिन कम करना है. so you can either inhibit the choline uptake by using this drug, or you can inhibit the choline uptake by using this drug, or you can use botulinum toxin. ज़्यादा एसिटिलकोलिन हो गया तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल स्टिफनेस होता है.
So botulinum toxin is a muscle relaxant, right? So if you want to increase the acetylcholine, you can increase by increasing their synthesis, or increasing their uptake, increasing their release, or preventing the reuptake, right? Now preventing the metabolism, अगर acetylcholine ज़्यादा चाहिए तो metabolism inhibit करो उसका, तो है ना cholinesterase inhibitors are used to enhance the, है ना cholinesterase क्या करेंगे, cholinesterase inhibitor क्या करेंगे, ये जो एंजाइम है मेटाबोलाइज करने वाला उसको इनहिबिट करके इसका लेवल यहाँ पे बढ़ा देंगे, मोर acetylcholine will be there, likewise that. So you can modify the acetylcholine. ये फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने ले चुका है ना, ये ऑलरेडी आपका हो चुका है. बस यहाँ पे याद रखना है कि if there is a decreased acetylcholine in the cholinergic neuron, so you have to increase. For example, in case of Alzheimer disease, अगर ज़्यादा acetylcholine हो गया है ना, तो cholinergic dominance हो गया, तो that is also troublesome, है ना, because है ना acetylcholine क्या करता है, we have seen the actions of acetylcholine. क्या रहेंगे actions acetylcholine के, है ना. So acetylcholine है ना, जब भी आपके टाइगर के मतलब है ना acetylcholine के एक्शन क्या रहेंगे, जैसे मैंने आपको बोला है कि आप अगर मान लीजिए कि आप जंगल में हो, टाइगर आ गए आपके सामने, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और वहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी होने के कारण नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा. नॉर एड्रेनालिन आपके है ना डिफरेंट बॉडी में चेंजेस करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, आपका आइज में माइटेसिस करेगा, आपका सलाइवरी सिक्रेशन कम कर देगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ करेगा, ठीक है. उसके बाद में आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है, पर्सपिरेशन कम करेगा, है ना, आपका जीआईटी को इनहिबिट करेगा, आपका पेरिस्टाल्सिस ऑफ यूरिनरी वो भी इनहिबिट करेगा, डिप्रेशन वगैरह सब इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, है ना, स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेट करेगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. ये एक्शंस आपके नॉरएड्रेनालिन के. वैसे उसके अपोजिट एसिटिलकोलिन के. एसिटिलकोलिन क्या करेगा, जब आप घर पे आते हो, रिलैक्स बैठे हो, तो क्या होता है, जो पिपिल बढ़ा था, आपका साइज बढ़ा था, माइटेसिस जो हुआ था वो कम हो जाएगा, मायोसिस हो जाएगा, ठीक है. जो आपका हार्ट रेट बढ़ा था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा. अभी थ्रेट नहीं है ना, राइट. तो घर पे आने के बाद में आपका पेरिस्टाल्सिस चालू हो जाएगा, भूख लगेगी, आपको खाना लगेगा, माउथ में वाटरिंग होगा, सलाइवरी सिक्रेशन होगा. सो बेसिकली एसिटिलकोलिन क्या करता है, एसिटिलकोलिन इंक्रीजेस द ऑल द सिक्रेशंस. एसिटिलकोलिन का कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर डिप्रेसिव इफेक्ट है, राइट. तो एसिटिलकोलिन का जीआईटी के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, एसिटिलकोलिन का यूरिनरी सिस्टम के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट है. सो एसिटिलकोलिन acts via its receptor. We are going to see the actions, don't worry, detail. So acetylcholine acts via receptor. So what are the receptors of acetylcholine? Acetylcholine is a neurotransmitter for cholinergic nervous system or parasympathetic nervous system. So acetylcholine act via two receptors. First one is known as a muscarinic receptor. Then denoted by capital M. M बोले तो muscarinic receptor, है ना. मस्करनिक रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर वाज वन ये क्या मशरूम, है ना. पहले ये क्या था, नाम कैसे पढ़ा देखो, देयर वाज वन मशरूम, एक मशरूम था यहाँ पे, तो इन दैट मशरूम देयर वाज वन अल्कोलाइड नोन एज अ मस्करिन. तो बाद में ये अल्कोलाइड पता चला. सो व्हेन पीपल यूज्ड टू ईट दिस मशरूम, मशरूम लोगों ने खा लिया, तो उनको क्या हुआ, तो उनको मतलब पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स आए, कैसे, फ्रॉथिंग इन द माउथ, मतलब बहुत सारा सलाइवा माउथ में. तो मस्करिन नाम का, है ना. तो देयर वाज अ मशरूम, एक मशरूम था, वो खाने के बाद में लोगों को, है ना, खाने के बाद में लोगों को फ्रॉथिंग हो गया, है ना, पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा हो गया, डायरिया हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे, है ना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है ना, हार्ट रेट कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ना. तो बाद में जाके पता चला कि उस मशरूम से एक अल्कोलाइड आइसोलेट किया, उसका नाम है मस्करिन. एंड एसिटिलकोलिन आल्सो प्रोड्यूसेस द सिमिलर एक्शन. दैट्स व्हाई एक थ्योरी दिया गया वहां पे कि एसिटिलकोलिन इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड विल प्रोड्यूस अ मस्करिन लाइक एक्शन. दैट्स व्हाई दैट रिसेप्टर इज नोन एज मस्करिनिक रिसेप्टर. तो मस्करिनिक रिसेप्टर बोला है इसको, तो मस्करिनिक रिसेप्टर, इट विल muscarinic receptor. So there are subtypes of muscarinic receptor. They are the G protein coupled receptor, M1, M2, M3, M4, M5. M1 is present in the gastric ganglia and CNS. CNS और gastric ganglia में होता है.
M2 इज प्रेजेंट इन द हार्ट एंड सीनस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। देन M3 का पता है, M3 इज प्रेजेंट इन द आईज, GIT, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकस एंड सम ऑल ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स में होता है, सीएनएस में होता है। देन M4 इज प्रेजेंट इन द CNS एंड M5 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द CNS। M4 M5 दोनों क्या है, CNS में होते हैं, याद रखना है। M1 M2 M3 ये तीनों आपको याद होना चाहिए। M1 इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक गैंग्लिया एंड CNS। M2 होता है आपके हार्ट के ऊपर, है ना, मतलब सबसे पहले खाना, दूसरे के बाद में दिल का सुकून और बाद में बाकी ऑर्गन्स, ठीक है। तो M3 is present in the eyes, GIT, bladder, bronchus, glands, CNS. M4, M5 CNS में, and second type of receptor is present in the nicotinic receptor. So acetylcholine or cholinergic system act via these two receptors. Muscarinic receptor from muscarine, there is a muscarine from mushroom, and nicotinic receptor from the Nicotiana lobia. Nicotinic receptor, nicotine is also kind of alkaloid. निकोटिन का अल्कलॉइड जब लेते हैं तो क्या होता है कि इट स्टिमुलेट योर सीएनएस, तो क्योंकि स्टिमुलेट योर सीएनएस इंक्रीजेस द स्केलेटल, है ना, इंक्रीजेस द मस्कुलर परफॉर्मेंस, जो है ना निकोटिन का जिनको लत लगा है उनको देखो निकोटिन लेने के बाद में वो थोड़ा फ्रेश होते हैं, क्यों? बिकॉज निकोटिन ऑल्सो प्रोड्यूसेस द एक्शन विच आर सिमिलर टू द एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिलकोलिन, राइट? दैट्स व्हाई again theory proposed that so there is another kind of receptor to which acetylcholine interact, known as the nicotinic receptor. Nicotinic receptor are of two type, इसका दो टाइप होता है, एक होता है NN, तो nicotinic receptor एवं NN, मतलब N for nervous system and N for nicotinic, तो nervous system में nicotinic receptor कौन सा है, तो NN है, देखो, so it is present in the ganglia and adrenal medulla. Nicotinic NN receptor is present in the neurons and ganglia. Now NN हो गया, now NM मतलब क्या, this N for nicotinic and M for muscles, so this is present in the neuromuscular junction, it is present in the neuromuscular junction, so ठीक है, so N is present in the neurons and NM is present in the neuromuscular junction, the muscle, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर हो गए। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मस्कर्निक एंड निकोटिनिक, so remember nicotinic NN जो रिसेप्टर, इट इज आयन, ओके, निकोटिनिक रिसेप्टर आर द आयन चैनल, ये क्या है, आयन चैनल, तो ये क्या है, मस्कर्निक रिसेप्टर इज अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मस्कर्निक रिसेप्टर आर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर आर द आइनोट्रोपिक रिसेप्टर और आयन चैनल्स, याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलकोलिन देखो, तो एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर ये है, ये एसिटिलकोलिन स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। देखो पहला पार्ट है आपका, है ना, ये एसिटाइल वाला, एसिटाइल ग्रुप, तो एसिटाइल ग्रुप, देन आफ्टर दैट देयर इज इथिलीन ब्रिज, CH2 इथिलीन ब्रिज, उसके बाद में है क्वाटरनरी अमोनियम पार्ट नोन एज ओनियम, सो दिस इज द एसिटिलकोलिन, है ना, एसिटिलकोलिन। नाउ वी विल सी द फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटिलकोलिन इन द डिटेल। पहला देखो यहाँ पे, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दो तीन बार देखेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो व्हाट आर दीज ड्रग्स? दे आर द ड्रग व्हिच स्टिमुलेट द इफेक्टर सेल व्हिच आर इनर्वेटेड, व्हिच आर सप्लाइड और व्हिच आर इनर्वेटेड और सप्लाइड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स। In general, their actions are similar to those seen after the stimulation of parasympathetic nervous system. So, cholinergic drugs are classified into different classes. So, first, पहला है esters of choline. Esters of choline. Esters of choline. तो देखो, esters of choline, in that you are going to have acetylcholine, methacholine, carbachol and bethanycol. ये क्या है? एसिटिलकोलिन इज अ नेचुरल और एंडोजेनस न्यूरोट्रांसमीटर, बट मिथाकोलिन इज सिंथेटिक, कार्बाकोल इज सिंथेटिक, बिथेनाकोल इज अ सिंथेटिक। सो ईस्टर्स ऑफ कोलिन, दे आर द ईस्टर्स ऑफ कोलिन। नाउ ईस्टर्स किसके साथ में है? ईस्टर्स ऑफ कोलिन, ईस्टर्स ऑफ कोलिन किसके साथ में है? तो एसिटिलकोलिन इज अ ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड विद द कोलिन। एसिटिलकोलिन इज अ ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड विद द कोलिन, है ना।
Carbachol and bithanacol. Carbachol, bithanacol, they are the esters of choline with the carbamic acid. यहाँ पे एसिटिल कोलिन में एसिटिक एसिड रहेगा और कार्बाकोल बिथेनाकोल में कार्बाकोल में कार्बामिक एसिड रहेगा एंड बिथेनाकोल में बीटा मिथाइल कार्बामिक एसिड रहेगा. बिथेनाकोल में बीटा मिथाइल कोलिन रहेगा, है ना. नाउ कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स. कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स, तो एसिटिल कोलिन जैसे एक्शन दिखाने वाले अल्कोलाइड्स है. एग्जांपल इज पिलोकार्पिन, मस्करीन, एरेकोलिन, है ना. ईस्टर्स ऑफ कोलिन जो है उनको अपन डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग भी बोल सकते हैं. You can call this class as a direct acting drugs, and you can call this second class as a okay, they are also a direct acting drug. So first and second class you can call them as a direct acting drug. Now third class क्या है आपका? third class है choline esterase inhibitor. choline esterase inhibitor. How you can increase the activity of acetylcholine? Either by giving the supply, either by similar looking like acting drug, either by inhibiting the metabolism. Metabolism कौन करता है? cholinesterase. So inhibit that. So cholinesterase inhibitor. So in that you have physostigmine is alkaloid, neostigmine is alkaloid, and irreversible inhibitors known as a phosphorus compound or known as a insecticide, organophosphate compound. थर्ड क्लास में आप थर्ड क्लास में आप दो सब क्लास कर सकते हो. रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटिल कोलिन एस्टरेज. पहला है रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरा है इरिवर्सिबल इनहिबिटर. तो ऐसा क्लास कर सकते हो आप. बाकी बाद में देखेंगे अपन बहुत सारे क्लासेस. और एसिटिल कोलिन इज अ, रिमेंबर क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. एसिटिल कोलिन क्या है? इट इज अ ईस्टर ऑफ कोलिन विद द एसिटिक एसिड. ईस्टर ऑफ कोलिन विद द एसिटिक एसिड. एंड व्हाइल कार्बाकोल बिथेनाकोल क्या है? कार्बाकोल एंड बिथेनाकोल. कार्बाकोल एंड बिथेनाकोल. Carbachol and bithanacol, they are the esters of choline with beta methyl choline, है ना. ester of choline and beta methyl choline respectively. मतलब क्या? कार्बाकोल क्या है? कार्बाकोल इज अ ester of choline with the carbamic acid. तो देखो कार्बाकोल क्या है? कार्बाकोल इज ester of choline with the carbamic acid, ना, choline. and bithanacol क्या है? bithanacol is a ester of बीटा मिथाइल कोलिन विद द कार्बोनिक एसिड. एक कोलिन का एस्टर है विद कार्बोनिक एसिड, एक बीटा मिथाइल कोलिन का एस्टर है कार्बोनिक एसिड. और एसिटिल कोलिन क्या है? एस्टर ऑफ एसिटिल कोलिन इज एस्टर ऑफ कोलिन विद द एसिटिक एसिड. तो एसिटिल कोलिन में एसिटिक एसिड एंड कोलिन है. कार्बाकोल में क्या है? कोलिन एंड कार्बोनिक एसिड है. बिथेनाकोल में क्या है? बीटा मिथाइल कोलिन एंड कार्बोनिक एसिड. ये क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है. I hope I am audible to you, right? Now again you can see the classification of your cholinergic drugs. Classification of parasympathomimetics. Cholinergic मतलब क्या? parasympathomimetics. Again classification है ना, जैसे मैंने बोला है उसको अपन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, जैसे वही सेम थिंग यहाँ पे. तो फर्स्ट क्लास इज डायरेक्टली एक्टिंग. फर्स्ट क्लास इज डायरेक्टली एक्टिंग. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग. डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग. एंड सेकंड क्लास है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, दे अगेन कैन बी क्लासिफाइड लाइक दिस: डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग. सो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग मीन्स व्हाट? आइदर दे आर एसिटिल कोलिन लाइक, है ना. उसमें देखो दो सब टाइप है. तो इसमें है पहला, है ना, ईस्टर्स ऑफ कोलिन. ईस्टर्स ऑफ कोलिन एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल है यहाँ पे एसिटिल कोलिन, है ना, ACH बोले तो एसिटिल कोलिन, मिथाकोलिन, है ना, बिथेनाकोल एंड कार्बाकोल. तो ऑल दे आर द ईस्टर्स ऑफ कोलिन. क्या है सब? ईस्टर्स ऑफ कोलिन. जैसे एसिटिल कोलिन क्या है? ईस्टर ऑफ कोलिन विद द एसिटिक एसिड, है ना. देन कार्बाकोल क्या है? ईस्टर ऑफ कोलिन विद द कार्बामिक एसिड. उसके बाद में बिथेनाकोल क्या है? ईस्टर ऑफ बीटा मिथाइल कोलिन विद द कार्बामिक एसिड. मतलब ये सब ईस्टर्स ऑफ कोलिन है. ठीक है. सेकंड इसमें आता है डायरेक्टली एक्टिंग में नॉन ईस्टर्स ऑफ कोलिन. मतलब ये ईस्टर्स नहीं है, नॉन ईस्टर्स ऑफ कोलिन. नॉन ईस्टर ऑफ कोलिन, इनको अपन ये बोल सकते हैं कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स. इसको अपन बोल सकते हैं कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स. इसमें भी दो आता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक. ऐसा भी कर सकते हो आप, नेचुरल एंड सिंथेटिक. कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स इसमें तो क्या है? कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स दे आर नोन एज अ, एग्जांपल क्या है? पिलोकार्पिन.
then nicotine, then lobeline, then arecoline, then dimethyl pyrophosphate DMPP, then oxotrimonin, pilocarpine, nicotine, lobeline, arecoline, dimethyl pyrophosphate and oxotrimonin. They are the कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स. देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको समझ के लेना है बॉस. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स. ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड लाइक दिस. पहला है आपका डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, तो उसमें ईस्टर्स ऑफ कोलिन, एंड सेकंड है कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड और नॉन ईस्टर्स ऑफ कोलिन. देन डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है ना, वो है. इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग क्या है, दे इनडायरेक्टली एक्ट, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्ट करते. कैसे, ईस्टर ऑफ कोलिन मतलब वो कोलिन एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट होंगे और वहां पे प्रोड्यूस करेंगे एक्शन. एंड नॉन ईस्टर्स क्या है कि दे स्टिमुलेट द रिसेप्टर, दैट्स व्हाई दे डायरेक्टली एक्ट एज एसिटिल कोलिन. सो डायरेक्टली एक्टिंग. नाउ इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब दे विल नॉट स्टिमुलेट द एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, दे विल नॉट स्टिमुलेट द muscarinic and nicotinic receptor, but they will inhibit the metabolism of acetylcholine. They will inhibit the metabolism of acetylcholine. That's how they will increase the level of acetylcholine. ठीक है, तो इसमें आता है रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, एंड सेकंड आता है इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. तो इरिवर्सिबल में क्या है कि इसमें सब पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसमें सब पेस्टिसाइड्स होते हैं. इरिवर्सिबल इनहिबिटर में सब पेस्टिसाइड होते हैं. एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर में अल्कोलाइड्स एंड सिंथेटिक ड्रग होते हैं, अल्कोलाइड्स एंड सिंथेटिक ड्रग. रिवर्सिबल इनहिबिटर में कौन है भाई, फाइसोस्टिग्माइन, देन नियोस्टिग्माइन, देन पिरिडोस्टिग्माइन, देन एंड्रोफोनियम, ये सिंथेटिक है, देन टैकेरेन. फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पिरिडोस्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम एंड टैकेरेन. दे आर द रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज. क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोलिनेस्टरेज, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो याद रखना है रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर क्या है, फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पिरिडोस्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम, टैकेरेन. एंड ये इरिवर्सिबल कौन है, इसमें सब क्या है, पेस्टिसाइड्स. तो देखो पेस्टिसाइड कौन से, आइसोफ्लोरोफॉस्फेट, देन मेलाथायोन है ना, देन प्रोपोक्सर, देन डायजीनो है ना, डायज़ायन, डायजीनॉन, ऐसा भी बोल सकते हैं, डायज़ायन और डायजीनॉन बोलो. एंड देन पैराथायोन, डायजीनॉन, प्रोपोक्सर, मेलाथायोन एंड आइसोफ्लोरोफॉस्फेट. सो दे आर नोन एज अ irreversible inhibitor of acetylcholinesterase, irreversible inhibitor of acetylcholinesterase. They irreversibly inhibit the acetylcholinesterase and increases the level of acetylcholine. ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन 2-3 बार लेना है. तो देखो यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, they are classified into two. First one is directly acting. तो ईस्टर्स ऑफ कोलिन एंड नॉन ईस्टर्स ऑफ कोलिन, इसमें दो क्लास कर सकते हो, जैसे ऊपर देखा है अपन. तो एसिटिल कोलिन, पिलोकार्पिन, बिथेनाकोल, मिथाकोलिन, कार्बाकोल है ना, ये सब क्या है, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है. और इनडायरेक्टली एक्टिंग कौन है, इनडायरेक्टली एक्टिंग, तो दे आर नोन एज एसिटिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, एसिटिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है ना. इनडायरेक्टली एक्टिंग सेकंड क्लास है एसिटिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. तो इसमें दो आता है, रिवर्सिबल इनहिबिटर. तो रिवर्सिबल इनहिबिटर अगेन है रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर. इरिवर्सिबल में क्या है, सब पेस्टिसाइड्स है, मैंने जैसे बोला है आपको. तो इनके सब इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ऑल पेस्टिसाइड्स. रिवर्सिबल में क्या है, अल्कोलॉइड्स एंड सिंथेटिक ड्रग. नाउ इन दैट आल्सो देयर आर टू क्लासेस they can be classified further, lipid soluble and water soluble. लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. देखो यहाँ पे क्लियर कर लो, रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, उनको ही एंटी कोलिनेस्टरेज बोलते हैं ना. कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर को ही अपन एंटी कोलिनेस्टरेज भी बोलते हैं कुछ बुक्स में.
रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। देखो लिपिड सोल्यूबल जो है दे आर नोन एज अ लॉन्ग एक्टिंग, लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होते तो दे लिपिड सोल्यूबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दे आर लॉन्ग एक्टिंग, एंड वाटर सोल्यूबल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, वाटर सोल्यूबल इज शॉर्ट एक्टिंग। तो लिपिड सोल्यूबल में आता है फाइसोचिकमाइन, सैक्रिन, ये दोनों नेचुरल है अल्कोलाइड्स, डोनेपेजिल सिंथेटिक ड्रग, रिवास्टिकमाइन सिंथेटिक, गैलेंटामाइन सिंथेटिक। तो दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। नाउ शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। न्यूओस्टिगमिन, पिरिडोस्टिगमिन, एंड्रोफोनियम, ये जो है तीनों न्यूओस्टिगमिन, पिरिडोस्टिगमिन, एंड्रोफोनियम, दे आर नोन एज वाटर सोल्यूबल और शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। सबसे शॉर्ट एक्टिंग होता है एंड्रोफोनियम, सबसे शॉर्ट एक्टिंग होता है एंड्रोफोनियम। तो एंड्रोफोनियम इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। Entroponium is the shortest acting reversible cholinesterase inhibitor. That's why it is used in the treatment of, that's why it is used in the diagnosis of myasthenia gravis. तो ये diagnosis में use किया जाता है myasthenia gravis। It is used in the diagnosis of myasthenia gravis. Myasthenia gravis क्या होता है अपन देखेंगे। There is a weakening of skeletal muscle. Now इसमें irreversible में क्या आता है कि organophosphate compound एंड कार्बामिक और कार्बामेट, कार्बामिक एसिड और कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट में आता है आप मैलाथायोन, पैराथायोन, डाइफ्लोरोफॉस्फेट DFP, देन क्लोरोपायरोफॉस, इकोथायोपेट, ये सब क्या है पेस्टिसाइड्स है जो आप स्प्रे करते हो ना कॉटन के ऊपर, जो भी क्रॉप के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो, ऑल दे आर द ऑर्गेनोफॉस्फेट। और अपन इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे ये चैप्टर में, राइट। सो देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट, ओके। सो कोलिनेर्जिक ड्रग either directly acting, indirectly acting. Indirectly acting means anticholinesterase, either reversible or irreversible. Now irreversible in that organophosphate like malathion, parathion, difluorophosphate, chloropyrophos, icothiopate, and nerve gases. Nerve gases they are used in the chemical warfare, है ना। उसमें nerve gases like example ताबून, सारिन एंड सोमन, दे आर नोन एज अ नर्व गैसेस। जैसे कोई वार अफेयर होता है, जैसे यहाँ पे चल रहा है ना रशिया एंड यूक्रेन, तो यूक्रेन ने क्या किया था, धमकी दिया था कि हम वहाँ पे केमिकल वेपन यूज करेंगे। केमिकल वेपन मतलब क्या, तो केमिकल वेपन मतलब यही नर्व गैस, तो नर्व गैस या फिर है ना जो मस्टर्ड होता है एंटी कैंसर में जो मस्टर्ड देखिए वो, तो नर्व गैसेस, तो ये गैस जिसने इनहेल किया वो मर जाएगा। साबुन, सारेन, सोमन, दे आर द नर्व गैसेस, राइट। नाउ कार्बामेट में आता है आपका कार्बेरिल, प्रोपोक्सर एंड अल्डिकार्ब, दे आर नोन एज अ कार्बामेट डेरिवेटिव। ओके, तो अगेन यू कैन सी द क्लासिफिकेशन, यहाँ पे और एक बार क्लासिफिकेशन देखो। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक ड्रग्स आल्सो नोन एज अ कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स और पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ओके, और उनको बोलेंगे अपन डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, है ना। एंड एंटी कोलिनेस्टरेज, उनको बोलेंगे अपन इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, है ना। इसको अपन डायरेक्टली एक्टिंग बोलेंगे। ये है इनडायरेक्टली एक्टिंग, राइट। डायरेक्टली एक्टिंग और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है कोलिनिस्टर्स, आपने देखा है कोलिनिस्टर्स, एसिटिल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनेकोल। इसमें क्या है कोलिन एंड कॉल, ये टर्म आएगा देखो, एसिटिल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बिथेनेकोल। इसमें कॉल एंड कोलिन कॉल ये टर्म आएगा, ठीक है। देन अल्कोलाइड्स में आता है इसके मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एरेकोलिन, है ना। मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एरेकोलिन, क्योंकि मस्कैरिनिक रिसेप्टर नाम ही मस्कैरिन के अल्कोलाइड की बेसिस पर है ना, राइट। नाउ इनडायरेक्टली एक्टिंग और एंटीकोलिनेस्टरेजेस और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, इसको अपन कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर भी बोलते हैं और एंटीकोलिनेस्टरेज भी बोलते हैं, ठीक है, राइट।
तो यहाँ पे रिवर्सिबल वाले हैं एंड इरिवर्स। तो रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर और रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज। तो इन दैट यू हैव कार्बामेट और कार्बोमिक एसिड डेरिवेटिव। तो फाइसोस्टिग्माइन इज अल्कोलाइड आल्सो नोन एज इसेरिन। इसके ऊपर नाइपर में क्वेश्चन आ चुका है। फाइसोस्टिग्माइन इज आल्सो नोन एज इसेरिन, है ना, ये अपन ने देखा है ऑलरेडी। देन नियोस्टिग्मिन इज देयर, पिरिडोस्टिग्मिन इज देयर, एंड्रोफोनियम। देखो फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पिरिडोस्टिग्माइन, स्टिग्माइन यहाँ पे है सब, स्टिग्माइन, माइन, देन एंड्रोफोनियम, देन रिवास्टिग्माइन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन। डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, रिवास्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम, ये सब क्या है? ये सब सिंथेटिक है। ये सब क्या है? नेचुरल अल्कोलाइड्स। नाउ एक्रिन डेरिवेटिव टेक्रिन, टेक्रिन भी क्या है? नेचुरली। नाउ इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर में आता है दो टाइप का, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड और ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड में आता है डाइफ्लोरोफॉस्फेट और डाइफ्लॉस, इकोथायोफेट, देन मेलाथायोन, डाइजिनॉन का एक ब्रांड नेम होता है टिक 20, जो आपने यूज किया होगा, आई डोंट नो। अगर आप खेती करते हो तो जो जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, तो उनको ना एक कीड़े लगते हैं जिनको बोलते हैं गोचिड, तो वो रिमूव करने के लिए टिक 20 नाम का एक दवा आता है। दैट इज नथिंग बट डाइजिनॉन। देन दी साबुन, सारिन, ताबून एंड सोमन, दे आर नोन एज नर्व गैसेस, है ना, नर्व गैसेस। दे आर द इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटिल कोलिनेस्टरेज। और इसमें कार्बोमिक एसिड डेरिवेटिव में आता है कार्बेरिल एंड प्रोपोक्सर। तो बेगोन आता है आपका, बेगोन में क्या है? प्रोपोक्सर होता है। बेगोन है ना, बेगोन आपने सुना होगा, कॉकरोच मारने की दवा। कॉकरोच मारने की दवा क्या है? बेगोन में क्या आता है? बेगोन में ड्रग कौन सा है? दिस प्रोपोक्सर इज अ इंसेक्टिसाइड। क्या है? इंसेक्टिसाइड है। प्रोपोक्सर इज अ इंसेक्टिसाइड। बेगोन में आता है, बेगोन। नाउ विल सी द एसिंथेसिस स्टोरेज रिलीज, ऑलरेडी आपने देखा है, बट स्टिल, है ना, इट इज अ एसिटिल कोलिन इज अ प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर फॉर कोलिनर्जिक सिस्टम present at neuromuscular junction as well as a preganglionic fiber synthesized from acetyl group from acetyl CoA and choline from extracellular, है ना, catalyzed by acetyl CoA synthase, है ना, or cholinesterase transferase. After synthesis, it is stored in the synaptic vesicle and released by the process of exocytosis. Every neurotransmitter is released by the exocytosis. ये पे यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है, आ चुका है। तो हेमोकोलिनियम ब्लॉक करता है कोलिन का अपटेक, है ना, अपने देखा है। वेसिनिकॉल इनहिबिट द सेलुलर वेसिकुलर अपटेक, बोटुलियम टॉक्सिन इंटरफेयर विद द रिलीज ऑफ योर एसिटिल कोलिन। तो टू टॉक्सिन इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ कोलिनर्जिक रिलीज। फर्स्ट वन इज द बोटुलियम टॉक्सिन व्हिच इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन। दूसरा एक होता है ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन which induces the massive depletion of and release of acetyl choline. तो बोटुलियम टॉक्सिन रिलीज इनहिबिट करता है और ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन यहाँ पे रिलीज ज्यादा करता है। नाउ मेटाबोलाइज एसिटिल कोलिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय टू एंजाइम। आपने देखा है ट्रू कोलिनेस्टरेज और एसिटिल कोलिनेस्टरेज एंड सूडो कोलिनेस्टरेज और ब्यूटारो कोलिनेस्टरेज, ये ऑलरेडी देखा है। नाउ साइट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड टाइप ऑफ रिसेप्टर इन्वॉल्व। देखो यहाँ पे कहाँ पे एसिटिल कोलिन का एक्शन होगा और रिसेप्टर कौन सा होगा। नाउ ठीक है, रिसेप्टर कितने हैं आपको मालूम है? मस्कर्निक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, है ना। तो मस्कर्निक रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? मस्कर्निक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स, एंड फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। आप बोलेंगे ये कहा उल्टा हो रहा है, नहीं उल्टा नहीं, है ना। तो ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स और जो पैरासिम्पैथिक नर्व है उसके तो मस्कर्निक रिसेप्टर होगा ही होगा, बट देर आर टू थ्री ऑर्गन्स हियर इन द एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, इन द सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, so you have muscarinic receptor.
जैसे यहाँ पे स्वेट ग्लैंड is having muscarinic receptor. Then some blood vessels are also having muscarinic receptor. Type of receptor क्या है? muscarinic receptor denoted by capital M. उसका agonist होता है selective agonist for muscarinic receptor is a muscarine alkaloid obtained from mushroom से आता है, and selective antagonist होता है उसका atropine. That's why in case of mushroom poisoning antidote is atropine. In case of mushroom poisoning antidote is atropine, याद रखना है, ठीक है. Now in case of ganglia, that is sympathetic as well as parasympathetic and adrenal medulla, n receptor is present, nicotinic n, ठीक है. तो इसका agonist होता है डायमिथाइल फिनाइल पिपरेजिनियम and blocker is hexamethonium. Hexamethonium is ganglionic blocker. Hexamethonium क्या होता है? ganglionic blocker होता है. उसका एगोनिस्ट कौन है? सिलेक्टिव एगोनिस्ट डायमिथाइल फिनाइल पिपरेजिनियम. और स्केलेटल मसल के ऊपर है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना एन. तो अगेन फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम इज द एगोनिस्ट, क्यूरारे इज द एंटागोनिस्ट. तो क्यूरारे क्या है? दे विल कॉज मसल रिलैक्सेशन. क्यूरारे इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है ना. हेक्सामेथोनियम इज अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है ना. गैंग्लियोनिक ब्लॉकर भी यूज करते हैं हाइपरटेंशन में, ये है ना. देन सीएनएस में कॉर्टेक्स जो है बेसल गैंग्लिया. इन द सीएनएस कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर साइट्स यू हैव बोथ muscarinic receptor and nicotinic receptor. Muscarinic is a selective agonist, atropine is antagonist. Nicotinic receptor के लिए carbachol is a selective agonist, curare is a antagonist, ठीक है. Now pharmacology of acetylcholine, ठीक है. Now acetylcholine act on a different receptor. उसके रिसेप्टर कौन से हैं? muscarinic receptor है ना and nicotinic receptor, MNN, ठीक है. तो muscarinic receptor क्या होता है? okay. Muscarinic receptor are nothing but the G protein coupled receptor. They are GPCR and you have subtypes M1, M2, M3, M5. M1, M2, M3, M3, M4, M5. इतने हैं आपने देखा है. Now there is no circulating ACH in the blood. मतलब ब्लड में एसिटिलकोलिन होता ही नहीं है. एसिटिलकोलिन कहाँ पे होता है? एसिटिलकोलिन इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स. तो नो सर्कुलेटिंग एसिटिलकोलिन इज देयर. ब्लड में एसिटिलकोलिन होता ही नहीं है. मैं तो बोलेंगे ब्लड में चलता है. ये सब कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? ये सब कार्यक्रम चल रहा है न्यूरॉन्स में. एड्रेनर्जिक भी और कोलिनर्जिक भी, सब न्यूरॉन का खेल है ना. यहाँ पे ब्लड का संबंध ही नहीं. नो सर्कुलेटिंग एसिड इज देयर. नो मस्कार्निक रिसेप्टर M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है. नाउ इन दैट आल्सो M1, M3, M5, जो M1, M3, M5 जो ऑड वाले हैं, तो M1, M3, M5 ये क्या है? सब ऑड है. सो दे हैव ग्रेट होमोलॉजी, मतलब ये सिमिलर है. M1, M3, M5 हैव ग्रेट होमोलॉजी. So M1 is present in the CNS and ganglia, M2 is present in the heart, M3 is present in the smooth muscles of GIT, and M2 and M4 जो E1 वाले M2, M4 they are similar in the action, right? Now M1, M3 they activate the GS protein. M1, M3 क्या एक्टिवेट करते हैं? GS मतलब G प्रोटीन का. GS क्या होता है? G स्टिमुलेटरी. मतलब ये स्टिमुलेटरी होती है वो है. M1, M3 activate the GS, they are stimulatory in nature, they are responsible for the stimulation of then activation of phospholipase C activity, which leads to hydrolysis of phosphatidyl inositol and production of phosphatidyl inositol pyrophosphate. It is a PIP from inositol 1,4,5 triphosphate, responsible for the release of calcium. Inositol 1,4,5 triphosphate मतलब IP3 inositol 3-phosphate, which causes the release of calcium from the endoplasmic reticulum of cell, and diacylglycerol responsible for the activation of protein C. So that's why they cause stimulation. So muscarinic receptor, M3 receptor, M1, M3 they are the stimulatory in nature. M2 receptor क्या है? Which activate the GI मतलब ये inhibitor होता है. So result in the inhibition of adenyl cyclase and regulation of specific potassium ion channel, particularly in the heart. M1 receptor stimulatory, M2 inhibitory. Then nicotinic action क्या है?
निकोटिनिक एक्शन, तो निकोटिनिक रिसेप्टर दे आर नथिंग बट लिगैंड गेटेड आयन चैनल, ये आयन चैनल होता है, एंड देयर एक्टिविटीज causes the rapid increase in the cell permeability for the sodium and potassium depolarization and excitation. So NM is present. NM कहाँ पे होता है? Neuromuscular junction. NM is present in the neuromuscular junction and also called as the N1 receptor. NM को ही अपन N1 बोलते हैं. NN कहाँ पे होता है? NN is present in the ganglia और nerves, also known as N2. ये निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कार्निक रिसेप्टर दोनों रिसेप्टर्स है और कैसे कैसे एक्ट होते हैं ये मैंने आपको वहाँ पे बोला है, ठीक है। पायरोफॉस्फेट पॉलीप, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन। आई होप आई एम ऑडिबल, साउंड आ रहा है आपको? फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन, साउंड आ रहा है आपको? यस नो लिखिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज राइट यस नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ आई एम गेटिंग, if you are getting my voice, please write yes no in the comment box. सबको समझ में आ रहा है? yes no लिखिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन, आपको ऑलरेडी एक्शंस बोला है मैंने बहुत बार। तो एसिटिलकोलिन इज नॉट गिवन ओरली, है ना, एसिटिलकोलिन ओरली नहीं दे सकते। इफ इट इज गिवन ओरली इट इज डिस्ट्रॉयड इन द गैस्ट्रिक जूस। अगर ओरली देंगे तो जीआईटी में स्टमक में ही डिस्ट्रॉय होगा। तो इट इज गिवन बाय इंट्रावेनस रूट, and if it is given by intravenous route, still some amount of acetylcholine is destroyed by pseudocholinesterase present in the plasma and true cholinesterase present in the neuron, ठीक है। what are the actions of acetylcholine? देखो acetylcholine की एक्शन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो किसके अपोजिट है? एड्रेनालिन के अपोजिट। तो नॉर एड्रेनालिन क्या करता था? इट वाज स्टिमुलेटिंग द हार्ट, इट वाज इंक्रीजिंग द force of contraction, blood pressure, rate of contraction, heart rate. मतलब noradrenaline was having positive inotropic, positive chronotropic and positive dromotropic effect. So opposite to that, acetylcholine will depress heart. Acetylcholine will depress heart. So it will have depressive effect on SA node. It will cause bradycardia. That is a negative chronotropic effect. Heart rate कम करता है, negative chronotropic, है ना, एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम करता है। दैट्स व्हाई नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, एंड इट कॉजेज द एवी ब्लॉक, तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। एक्शंस ऑफ दिस एक्शन जो है, जो सप्रेसिव एक्शन ऑफ हार्ट, एसिटिलकोलिन सप्रेसेस द हार्ट, इज अ नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग, नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, so that can be reversed by atropine. So atropine can block this action. Or even atropine can cause tachycardia. That's why atropine क्या है? It is a muscarinic blocker agent. Muscarinic blocking हो रहा है। Atropine is a muscarinic blocker and atropine causes the tachycardia. muscarinic को block करता है ये। So it is a muscarinic blocker. Now blood vessel के ऊपर क्या action है? So acetylcholine causes the vasodilation of skin and mucous membrane. Blood vessel supplied to skin and mucous membrane. So M3 receptor is there on a blood vessels. So by acting on a M3 receptor, acetylcholine will dilate the blood vessels, you know. Then again it will stimulate endothelium to release the nitric oxide. Blood vessel का जो inner layer होता है endothelium, वहाँ पे nitric oxide का stimulation करता है release के लिए। And what is nitric oxide? Nitric oxide is known as a endothelial derived relaxing factor. Nitric oxide क्या होता है? vasodilator।
vasodilator that causes the vascular relaxation, and if vascular endothelium is damaged, है ना, अगर vascular endothelium अंदर का लेयर, सबसे इनर लेयर अगर ब्लड वेसल का डैमेज है तो वहाँ पे एसिटिलकोलिन वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है. अदर स्मूथ मसल, जीआईटी के स्मूथ मसल क्या है? ऑब्वियसली स्मूथ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्फिंक्टर्स आर रिलैक्स्ड. स्फिंक्टर्स आर रिलैक्स्ड, स्मूथ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, so that there is a increased peristalsis. और एसिटिलकोलिन सभी सिक्रेशन बढ़ देगा. एसिटिलकोलिन सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ता है, इट विल इंक्रीज ऑल सलाइवरी सिक्रेशन, जीआईटी सिक्रेशन, है ना, सिक्रेशन सब कुछ बढ़ देता है. So it contract the smooth muscles of gallbladder also and contract the smooth muscles of urinary bladder and relaxes the sphincter. है ना, मतलब acetylcholine will increase the peristalsis. Under the influence of acetylcholine, your GIT will be active, your urinary system will be active. जैसे adrenaline or noradrenaline will suppress the GIT, will suppress the urinary system. Opposite to that, your acetylcholine will stimulate peristalsis, will stimulate urinary peristalsis. But noradrenaline was causing relaxation of your bronchial smooth muscle. तो जो bronchial smooth muscle है उसका relaxation करता था कौन? noradrenaline. उसके अपोजिट क्या करेगा फिर acetylcholine? Acetylcholine causes the constriction or contraction of smooth muscles of bronchi. So acetylcholine can cause asthma. Now secretions or exocrine glands, secretions जो है exocrine gland की, so it will increases the gastric secretion, intestinal, pancreatic secretion, increasing the bronchial secretion, salivary, lacrimal, nasopharyngeal secretion. सभी तरह के सभी secretions acetylcholine बढ़ता है, and that's why जो atropine होता है that is anticholinergic drug. So atropine will cause dryness of mouth and atropine क्या करेगा? सभी secretion कम कर देगा. What are the actions of acetylcholine on the eye? Eyes के ऊपर क्या action है? So on the eyes it causes the constriction of pupil. मतलब क्या? Pupil का contraction करता है. It causes the miosis. So constriction of pupil that leads to miosis, pinpoint pupil, and decreases the intraocular tension. Contraction of ciliary muscle resulting into fixing of vision for short distance. ना, तो noradrenaline was fixing your vision for long distance by doing mydriasis. Acetylcholine is fixing vision for short distance, and it is known as a spasm of accommodation. Spasm of accommodation. तो क्वेश्चन आता है कि acetylcholine क्या करता है? What is the effect of acetylcholine on eye? So it causes the spasm of accommodation. ठीक है, right? Spasm of accommodation. Now autonomic ganglia के ऊपर क्या एक्शन है? Ganglia, stimulation of autonomic ganglia which causes the release of acetylcholine and adrenaline. Stimulation of ganglia leading to release of this acetylcholine and adrenaline दोनों का. Stimulation of adrenal medulla to release of which increases the blood pressure. The stimulation of adrenal medulla is also there, which causes the release of more adrenaline and which increases the blood pressure. In these action can be blocked by ganglionic blocker like hexamethonium. तो ganglionic blocker यहाँ पे यूज करते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर क्या है? तो इनिशियली इन स्मॉल डोसेज इट acetylcholine induces the contraction. In large doses it can cause paralysis of muscle because of the persistent deprivation. These actions can be blocked by D-tuberculin, neuromuscular blocker. Therapeutic use of acetylcholine, इसका यूज क्या है? It is ineffective orally because oral देंगे तो destroy हो जाता है. So, and very transient action is there. So it cannot be used orally for therapeutic purpose. But its substituent or उसके modify किए वाले drug, synthetic acetylcholine derivative, they can be used in the Alzheimer disease. So in the Alzheimer disease में क्या होता है? So in that there is a degeneration of cholinergic neuron. आपको एक मूवी आया था देखो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक. उसमें जो विकी कौशल होता है एक्टर, उनकी मम्मी जो होती है उनको ये
अल्जाइमर डिसीज हो जाता है, वो भूलने की बीमारी, राइट. तो इट इज यूज्ड इन द अल्जाइमर डिसीज बिकॉज इन द अल्जाइमर डिसीज देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ एसिटिलकोलिन कंटेनिंग न्यूरॉन, देयर इज जनरलाइज्ड डेफिशिएंसी ऑफ एसिटिलकोलिन. दूसरा है हंटिंगटन डिसीज, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द हंटिंगटन डिसीज. अगेन इन दिस ऑल्सो देयर इज सीवियर डीजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन. सो डिमेंशिया इज रिलेटेड विद द एसिटिलकोलिन डेफिशिएंसी, भूलने की बीमारी है ना. तो रिमेंबर दीज थिंग्स. तो दीज आर द यूजेस, है ना. एडवर्स इफेक्ट देखेंगे अभी इसमें. एडवर्स इफेक्ट में क्या रहेगा, वही ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. एडवर्स इफेक्ट्स आर आल्सो ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. तो सिंथेटिक एसिटिलकोलिन, सिंथेटिक कोलिनेस्टेरेज ड्रग, सो विल टेक टुमारो. सिंथेटिक कोलिनेस्टेरेज ड्रग विल टेक टुमारो, क्योंकि आज एक ही दिन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए तुमको, है ना. सो टुमारो विल टेक द सिंथेटिक कोलिनेस्टेरेज ड्रग एंड एंटीकोलिनेस्टेरेज विल स्टार्ट टुमारो. ये पूरा कोलिनेस्टेरेज वगैरह पूरा देखेंगे और उसके बाद में केमिस्ट्री देखेंगे इसका. तो ये भी एक सेक्शन आपका फार्माकोलॉजी का कवर हो जाएगा, है ना. मतलब जनरल फार्माकोलॉजी कवर हो चुका है, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस कवर हो चुके हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन एनएस भी कवर हो जाएगा. तो टुमारो विल सी द रिमेनिंग पॉइंट्स. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग, समझ रहा है आपको सबको. यस नो लिखिए कमेंट बॉक्स में. आई कैन टेक, मैं ले लूँगा, बट आपको उतना झेलने होना चाहिए, है ना. मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो सब कुछ मालूम है. बहुत बड़ा चैप्टर है. उसके बाद में स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट लेंगे अपन, और ये एएनएस वाला भी खत्म हो जाएगा. बाद में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रह जाएगा आपका, और एंटीबायोटिक और मेजर. तो विल सी यू टुमारो. एंड कल 7 बजे रेडी है यहाँ.